लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections Lok Nirnaya 2024. In this program, we'll bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। कार्यक्रम में लाएंगे आप तक चुनाव से जुड़े समाचार, साथ ही स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे चुनाव तैयारियों के बारे में। आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं विशेषज्ञ हैं राजनीतिक विश्लेषक ए सूर्यप्रकाश। सूर्यप्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। Namaste, thank you. Namaskar, sir. The headlines: nomination filing for first phase of Lok Sabha polls ended today. Candidates can file nominations in Bihar till tomorrow. Congress releases 7th list of candidates for the Lok Sabha elections. And Aam Aadmi Party MP from Jalandhar, Sushil Kumar Rinku, joins BJP. लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न। बिहार में कल तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की 7वीं सूची जारी की और जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू भाजपा में हुए शामिल। The filing of nominations for the first phase of Lok Sabha elections along with assembly polls in 2 northeastern states ended this evening. In Bihar, tomorrow is the last day for filing of papers for the Lok Sabha elections. In the first phase, 102 Lok Sabha seats in 17 states and 4 union territories, along with 32 assembly constituencies in Sikkim and 60-member house in Arunachal Pradesh, will go to polls on the 19th of April. Among states going to polls in a single phase for the Lok Sabha polls are Tamil Nadu, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands and Puducherry. The scrutiny of nominations will take place tomorrow, and in Bihar it will be on Saturday. The last day for withdrawal of candidature is Saturday, and in Bihar it will be the 2nd of April. However, voting in Bihar will be held on the 19th of April. पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी ने लोकसभा चुनाव की कवरेज करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए एक विशेष वेबसाइट pib.gov.in/elect2024 शुरू की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फ्लिप बुक जैसी विशेषताएं हैं, जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। Congress has released the 7th list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections. The party has fielded Shashi Singh from Sarguja constituency of Chhattisgarh, Dr. Menka Devi Singh from Raigad constituency, Devendra Singh Yadav from Bilaspur seat, and Biresh Thakur from the Kankar constituency. R. Sudha will contest from the Mailaduthurai constituency in Tamil Nadu. महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने दक्षिण मुंबई से मौजूदा सांसद अरविंद सावंत, ठाणे से राजन विचारे, रतनगिरी सिंधुदुर्ग से विनायक राउत, उस्मानाबाद से ओम प्रकाश निम्बालकर और परभणी से संजय जाधव को फिर से मौका दिया है। पार्टी ने औरंगाबाद से चंद्रकांत खैरे, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल और रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से अनंत गीते को भी पुनः पार्टी उम्मीदवार बनाया है। मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से अमोल कीर्तिकर की उम्मीदवारी तय की गई है। सांगली लोकसभा सीट पर भी शिवसेना यूबीटी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। Aam Aadmi Party's lone Lok Sabha member and Jalandhar MP Sushil Kumar Rinku and party's MLA Sheetal Angural have joined the Bharatiya Janata Party in the party headquarters in New Delhi today. They joined the BJP in the presence of party General Secretary Vinod Taude. Speaking on the occasion, Mr. Rinku alleged that the promises he made to the people of Jalandhar were not fulfilled because AAP did not support him. He said he is impressed with the working style of Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah.
लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को होगी। सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले तो आज पहले चरण की हम बात करें तो आज नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। हालांकि बिहार में कल तक भी नाम दाखिल किए जा सकेंगे। 102 लोकसभा सीट, सबसे बड़ा चंक हम कहें अगर लोकसभा सीटों का इस पहले चरण में होने जा रहा है। इसके अलावा साथ ही साथ सिक्किम और अरुणाचल विधानसभा के लिए भी जो है 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सबसे ज़्यादा सीटें, बहुत महत्वपूर्ण चरण मानते हैं आप इसको? ज़रूर, हर चरण महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होता है ये इस चरण में। और यहाँ कुछ दक्षिण भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट सीट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट का है और बिहार का है, तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड 1/5 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जी Sir, in the first phase, we are seeing 102 constituencies which are going to the polls. How out of these 102 seats, if we can say almost, the largest chunk of seats are in the very politically important state of Tamil Nadu. And you who have had more than 5 decades of experience in political reporting, how do you look at these particular polls? This is a very important election because for the first time a national party does not have an alliance with a very major Dravidian party. Of course, the Bharatiya Janata Party has tied up with, that is a ruling party at the federal level, I am saying. It has tied up with smaller parties in Tamil Nadu, but it does not have an alliance with the AEADMK when it is fighting the DMK. So this is going to be a very interesting three-cornered contest in that sense, and it will enable the Bharatiya Janata Party to improve its vote share. That is my assessment of this election, and so it is going to be a stepping stone for this party to build on in the coming years. जी, पीएमके से जो अलायंस हुआ है भाजपा का तमिलनाडु में पट्टाली मक्कल काची से, क्या ये जो गठजोड़ भाजपा करने में सफल रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा का मार्ग अब थोड़ा सा आसान होने जा रहा है तमिलनाडु में? ज़रूर, क्योंकि ये सब ये जाति और चुनाव और जाति हम अलग नहीं कर सकते इस देश में, और ये वनियार पार्टी कहते हैं, एंड वनियार लोगों का प्रभाव कई क्षेत्र में है, तो इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बीजेपी। एंड उसमें डॉक्टर रामदास पहले यहाँ मंत्री भी थे इन वो बीजेपी गठबंधन उस समय था, और इसलिए दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट अलायंस। जी, बीते सालों में हम तमिलनाडु में देखते हैं कि करुणानिधि और जयललिता के बाद एक राजनीतिक एक खालीपन सा, एक वैक्यूम सा वहाँ पर दिखाई पड़ता है। क्या इन चुनावों में आपको लगता है कि इन चुनावों में एक राजनीतिक एक जो ये जो खालीपन है ये कहीं ना कहीं भर पाएगा? ऐसा कोई नेतृत्व, ऐसा कोई वहाँ पर नेता उभर कर आने की आपको ज़रूर। आप ये एक कुदरत का खेल है, कभी एक वैक्यूम नहीं होता। तो आप ठीक कह रहे हैं कि वो करुणानिधि और जयललिता, 2 वेरी मेजर फोर्सेस वर फाइटिंग ईच अदर। अब दोनों नहीं हैं। अब स्टालिन हैज़ टेकन चार्ज ऑफ डीएमके, और मुझे लगता है वो डीएमके का नेतृत्व वो ठीक कर रहा है, लेकिन उसके काउंटर में क्या, जो अन्ना डीएमके टूट गया, 2-3 पता नहीं कितना टुकड़े हो गए, और इसलिए वो स्टालिन और डीएमके को विरोध करने के लिए कुछ ना कुछ होने वाला है। तो भाजपा उस जगह को लेने का एक प्रयत्न इस चुनाव में करेंगे। Sir,
I'd also like to know from you that many analysts have opined that if you look at the best possible scenarios, the Dravidian parties have around 40 to 45% of the vote share in Tamil Nadu, whereas for the rest, if we say it is between 55 to 60% is open. So, do you see some other party making a dent into that huge floating vote percentage? Absolutely, that is certainly possible. And I also believe that this Dravidian versus non-Dravidian divide is actually, it's really not a very serious division among the voters or in the population. And we were talking about the most important South Indian state which is going to the polls in the first phase, that is Tamil Nadu, and we would be joining our Chennai correspondent Joy shortly. Good evening, Joy. All the seats of Tamil Nadu are going for polls in the first phase on 19th of April, and today was the last date of filing of nominations. What's the final list of candidates from Tamil Nadu? Yes, Kaushik. Today, more than 950 candidates have filed their nominations. Tomorrow, their nominations will be scrutinized, and 30th March is the last date for withdrawal of nominations. We are going to polls on the 19th of April. To tell you some interesting things, State BJP chief is contesting from Coimbatore. Former Governor Tamilisai Soundarajan, she is contesting from South Chennai against Tamilachai Tangapandian. And Kanimuri is contesting from Tuticorin. And former Union Minister Pon Radhakrishnan is contesting from Kanyakumari against Vijay Vasant, who is presently the MP from Congress. In Nilgiris, former Union Minister Raja and our Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. Murugan, will be contesting. They've all filed their nominations today. And in Ramanathapuram, one interesting thing is that former Chief Minister O. Pannirselvam is contesting, and 5 people are having the same names actually. So that is very interesting. And in Virudhunagar, the competition is going to be likely very tight because actress Radhika, who recently joined BJP, is contesting, and from DMDK, that is Captain Vijayakant's party, his son is contesting. Vijay Prabhakaran is contesting against Manikam Thakur, who's been winning the constituency from. He's a Congress candidate. He's been winning the constituency for a very long time. And TTV Dinakaran, who is from the breakaway group of ADMK, and he is contesting on BJP seat from Theni. In Dharmapuri, former Union Minister Andumani's wife, Soumya Andumani, is contesting. So these are all the interesting constituencies which are to look out for. Thank you, Joy, for your Thank you. input. Sir, you just heard our correspondent Joy from Chennai. Yeah. Very interesting thing, I would say, which emerged is big names. And certainly one interesting factor is 5 candidates who have the same name. Yeah, many times political parties look out for voters, persons who are on the voters list, who have the same name as their main opponent, and get him to file the nomination. So 5 Pannirselvans and O Pannirselvans are going to create havoc for voters. It's going to be very difficult also because Pannirselvan number 1 is an independent. So God knows what symbol he will get and what symbols others will get. It's going to be pretty complicated. जी 2019 के अगर हम चुनावों की बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीटों में से 38 सीटों पर डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कब्जा किया था, और अब जब 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का तमिलनाडु में, तो इस बार बीजेपी भाजपा ने काफ़ी प्रयास भी किए हैं और प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी सभाएं की, काफ़ी समय दिया है तमिलनाडु में, और के अन्नामलाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही। क्या राजनीतिक परिदृश्य आपको दिख रहा है? क्या इस बार सियासी तस्वीर बदलेगी तमिलनाडु की? कुछ बदलेगी, ज़रूर बदलेगी, क्योंकि भाजपा का जो सोच है और जो प्लानिंग जो है वो कमाल का है। अमंग इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज
इतना सोच, गहरे सोच, चुनाव प्रक्रिया में कौन उम्मीदवार होना चाहिए, जैसे वो गवर्नर को इस्तीफा दिया, अब वो कैंडिडेट बन गए हैं, और बीजेपी प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहा है कोयम्बतूर में, तो इसलिए बीजेपी वोट शेयर तो ज़रूर बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी वजह से सीट कितना आता है ये तो देखने वाली बात जून होगी। 4 तारीख को हमको मालूम होगा। जी, और अब हम चलते हैं अंडमान निकोबार, जहां हमारे संवाददाता राकेश पोर्ट ब्लेयर में मौजूद हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें कि 572 द्वीप मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है, यहाँ की लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर क्या ताज़ा जानकारी अभी तक आपके पास है? ये ऐसा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस बार का जो चुनाव है वो पिछले चुनाव की तरह दिलचस्प हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने 3 बार के जो पूर्व सांसद विष्णुपद रे हैं उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौजूदा सांसद कुलदीप राय शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इस बार के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा ऑल इंडिया अन्ना डीएमके, अंडमान निकोबार डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अंडमान निकोबार जनता पार्टी के साथ 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। आज नामांकन भरने की अंतिम तिथि थी और आज कुल 10 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे। इन्हें मिलाकर द्वीपों की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए कुल 15 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में हैं। 30 मार्च तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं और इसके बाद ही चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या का सही पता चल पाएगा। द्वीप समूह में अब तक मतदाता सूची में 3,13,878 मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं। इनमें से 1,63,337 पुरुष और 1,50,538 महिला मतदाता हैं। द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी DS जगलाल ने बताया कि दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या 2,355 है। 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 1,042 तथा 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 5,040 युवा मतदाताओं के नाम भी शामिल हैं। 3 ट्रांसजेंडर भी मतदाता सूची में है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो 923 है, जिसका तात्पर्य यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। द्वीपों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की ओर से सामान्य पर्यवेक्षक, पुलिस पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। द्वीपों में पहले चरण के तहत चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है और उम्मीदवारों द्वारा नुक्कड़ सभाओं तथा संपर्क सभाओं के माध्यम से मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बनाया जा रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार का चुनाव विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर होगा। देखना यह होगा कि 4 जून को मतगणना के दिन द्वीपों के मतदाताओं ने किसे लोकसभा में द्वीपों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना है। जी राकेश, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ए सूर्य प्रकाश जी, इस बार जो चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने, जो हमारे संवाददाता ने भी बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको जो है घर से ही वोट डालने की सुविधा निर्वाचन आयोग दे रहा है, और साथ ही साथ 40% दिव्यांगता वाले वोटर्स को भी, मतदाताओं को भी घर से ही वोट डालने की वो अनुमति दी गई है। इसको आप कितना बड़ा इनिशिएटिव, पहल मान रहे हैं इस बार निर्वाचन आयोग की? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि उस आयु के लोग अब एक पोलिंग बूथ आना जाना, अब 30, 40, 50 साल पहले मैं देखा हूँ सब पार्टी ये ऑटो रिक्शा या कुछ व्यवस्था कर रहे थे वोटर्स को, अब वो सब बंद हो गया है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है और इसको आगे ले जाना चाहिए। जी, सीनियर सिटीजन्स को एक व्यवस्था होना चाहिए। Sir, you also heard quickly that what our ANN correspondent said, that there are 572 islands in there, and 3,13,000 total number of voters. So you have also been keeping a hawk's eye on what's going on in the islanders. Yeah. So what is your take on the coming elections there? No, actually it has been a seesaw between Congress and BJP. Because Vishnupad Ray had won in 1999, 2009, 2014. Earlier, Manoranjan Bhakta, I had met him 40 years ago when he got elected to the Lok Sabha from Andaman Nicobar from Congress party. Later now, more recently in the last round, Kuldeep Rai Sharma was the Congress candidate who won from there.
So it's a seesaw battle, and generally between Congress and BJP, I find that it swings between say 48-50% to about 44%. The winning this thing will have about 4-5 percentage points advantage over the losing candidate. Okay, and sir, we were discussing about the various phases of elections that are going, the states that are going to the polls in the first phase, and we are joined by our correspondent in Bhubaneswar, Prakash, and incidentally, Odisha is also going to see state assembly polls along with the Lok Sabha elections. So Prakash, namaskar, could you please give us the relevant information about the voting schedule for the Lok Sabha elections to be held in Odisha? Odisha is going for simultaneous Lok Sabha and Assembly elections. There are 21 Lok Sabha seats and 147 Assembly seats, which are going for polls in four phases. That is, the fourth phase is on 13th of May, the voting, and the constituencies which are going for polls is Kalahandi, Nabrangpur, Barampur, and Koraput Lok Sabha seats. And similarly, the assembly seats under these constituencies are also going for polls on the same day. So the other fifth phase will be on 20th of May, that is in Bargarh, Sundargarh, Balangir, and Kandhamal, Aska. So it is on 20th of May, and the sixth phase will be in Sambalpur, Keonjhar, Dhenkanal, Cuttack, Puri, and Bhubaneswar, and the voting will be on 25th of May. And the last and the final phase is the seventh phase, that is in Mayurbhanj, Baleswar, Bhadrak, Jajpur, Kendrapada, and Jagatsinghpur Lok Sabha seats on 1st of June. So accordingly, all the assembly constituencies coming under this Lok Sabha seats will also go for poll on the same day. Okay. Prakash, can you also tell us about the arrangements and preparations made by the Election Commission for both the Lok Sabha and Assembly polls in the state, and what's the update on the names of the key candidates in the first phase? Yeah, as Odisha is going for both Lok Sabha and Assembly elections, so naturally the poll preparedness is double by the Chief Electoral Office here in Bhubaneswar. So they had already completed the EVM awareness drive during the last January and February all over the state through mobile demonstration van and EVM demonstration centers. And the CEO had also made representatives of all recognized political party for a free and fair election. And one round of training of polling personnel and security personnel have been completed as the elections will be held in the fourth phase. So naturally, some more rounds will be completed very soon, and more training will be given to them. And as far as you know that there are total 3 crore 35 lakh voters in Odisha, out of which male are 1 crore and 69 lakh and female are 1 crore 65 lakh. And around 8 lakh there are first time voters this time in Odisha. So far as political parties are concerned in Odisha, majorly there is a triangular fight this time among BJP, BJD and Congress. The BJP had already declared 18 Lok Sabha candidates out of the 21 seats, while the BJD came up with 15 Lok Sabha seats today. And the Congress is yet to announce any name for either for the Lok Sabha and the Assembly. And so far as the key candidates or the key constituencies are like Union Education Minister Dharmendra Pradhan is contesting from Sambalpur Lok Sabha seat after about 15 years because he was a member in the Rajya Sabha for 2 terms from other states. So this time for the he is contesting from Sambalpur, and he is pitted against the General Secretary Organization of Biju Janata Dal, Pranab Prakash Das. Thank you. Yeah, please go on. Another very important member is from former Union Minister and sitting MP, Mr. Jewel Oram from Sundargarh, who is contesting against BJD's Mr. Dilip Tirki, who was former Indian hockey captain. And Chief Minister Naveen Patnaik is also contesting from Hindli Assembly seat in Ganjam for the 6th consecutive win to get into the Odisha Assembly. Thank you, Prakash. Thank you for that valuable input. Sir, Odisha has 3 crore 35 lakh plus voters, and the Biju Janata Dal has been in power for 5 terms now. This would be the 6th if they get elected. 1999 to 2004. Yeah. And
we can say a generation has gone in this period. So how do you assess these very important Lok Sabha as well as state assembly polls? I have been tracking Lok Sabha and Assembly poll results in all states generally over the years. And Orissa is very interesting because in 1999, the BJP got 25% vote and the Congress had got 37% vote. In fact, in 2004 Lok Sabha election, the Congress got 40% of the vote. And in the same time, the BJD got 33% of the vote and 1999, and it got a comfortable majority. Now, from there, if you come 25 years later or 20 years later to 2019, the BJP vote share, which was 25% in 1999, has risen to 39%. And the BJD's vote share was 43%. That is in the 2019 Lok Sabha election. Whereas in the assembly election, the BJP got 32% and the BJD got 45%. But the most important thing is that the Congress party, which 25 years ago was around 40%, had dropped to 14% in 2019. So, the fall of the Congress party is what the BJP is taking advantage of in Orissa, and that is why many in the BJP felt it is not a good idea to have an alliance with the BJD. They must occupy the opposition space and defeat the BJD rather than going with it and allowing the opposition space to be left vacant for the Congress to step in. जी, नवीन पटनायक ने इस बार INDIA गठबंधन से दूरी बनाए रखी है और केंद्र की राजनीति से उनको कभी कोई मतलब रहा नहीं है, हमेशा उन्होंने राज्य पर ही अपना फोकस बनाए रखा है। तो ये जो INDIA गठबंधन से उन्होंने दूरी बना के रखी है, क्या सियासी सोच आपको लगता है कि नवीन पटनायक की काम के मन में चल रही है, दिमाग में चल रही है? नहीं, वो बहुत अच्छा खेल रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो कई सालों से वो बीजेपी, अब 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, उनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है केंद्र सरकार के साथ, और साथ ही साथ बीजेपी